Aman, we are celebrating India's dream run. Yeah. But this decade, you started in 2016. This decade has clearly been your dream run. So how did it start for you? स्टार्ट कैसे हुई कंपनी? हाँ जी. हिंदी वी आर ऑल ओके राइट? ठीक, आप भी हिंदी में पूछ सकते हो. मैं कोशिश करूंगी. So we started 2016. I was working for a company called JBL, and they also make decent products, right? So I learned a lot from them on how to market, how to produce, or what's the landscape of the industry. And then one fine day, I decided that the market is changing, India is changing, consumers are changing, and मतलब हम लोग ना बहुत बोरिंग. अगर आप मार्केट आपको याद होगी तो पहले बड़े ब्लैक, ग्रे, यही वाइट ये प्रोडक्ट्स आते थे. सो व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग प्रोडक्ट्स लिटिल कूलर, वी मेड इन डिफरेंट कलर्स. वी स्टार्टेड टॉकिंग टू द मार्केट इन अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज. मतलब मार्केट ना बहुत चेंज होती है, आज भी चेंज हो रही है. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. जब हम कंज्यूमर से बात कर रहे थे तो एक इंस्टाग्राम में मेरे एक ऑफिस के बंदे ने लिखा है ये इट्स फ्राइडे, फ्राइडे को. तो मैंने बोला भाई स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक कर. तो कहता सर आप रहने दो, बिकॉज फ्राइडे वाज अ स्लैंग एट दैट टाइम, राइट? एंड आई डिडंट नो इट्स अ स्लैंग. So we started marketing our products in a very young audience. I don't know whether you saw today's newspaper in Times of India. We have like a front page ad with Netflix, Botex, Netflix. So the market changes every time. You have to talk to the consumers in a language which they understand. Make the products as they demand. With the changing times, changing colors, changing patterns, changing technologies, and we just did the right things. We didn't do too many things. We just brought in small products. पहले हम लोगों ने हेडफोन लॉन्च करे, फिर स्पीकर लॉन्च करे, फिर साउंड बार. लास्ट ईयर हमने घड़ियां लॉन्च करी. तो हमने धीरे धीरे कंपनी चलाई. और व्हाट डू यू से, we are happily living. Happily living well after, or something like that, right? So it's doing well. Touch wood, God has been kind. 6 years we've grown well. I think first year we did 7 crores. Second year we did 30. Third year we did 100. Then we did 700. Then we did 2000, and this year we are on the path of doing 4000 crores. So yeah, God has been kind. कोई भी ब्रांड को सक्सेस बनाने के लिए जो कस्टमर है उसका दिल जीतना पड़ता है. Forgive my Hindi, but you won the hearts of the Indian customers, especially the young ones, very early in your day. So how did you get a finger on the nerve of what the young Indian really wanted? Because you really created a niche where there was a gap. अभी तो बताया मैं. हाँ जी. Now we want to know more. What was the magic of both? Magic of both. मैम मैं आपको बताता हूँ कि एक ना पुराने ज़माने में ना अगर आप किसी उसमें जाते थे ना दुकानों में, तो हमारे दिल्ली में अगर आप खान मार्केट वगैरह जाओगे और उसमें ना छोटा सा एक बोर्ड लगा होता था, ग्राहक भगवान है. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन, but I think that is how I do my marketing, that we go very customer backward. It's very easy. अगर आप किसी भी उससे पूछोगे ना, जैसे अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो हमें ना जब MBA कर रहे थे, आई वेंट टू ISB, तो MBA कर रहे थे ना, तो हमें सिखाते हैं बहुत सारे मार्केटिंग मॉडल्स. दैट यू डू फर्स्ट यू डू कॉन्जॉइंट एनालिसिस, देन यू डू दिस डिड्यूव, एंड देन यू डू दिस XYZ, एंड देन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट. I think it's not required. I think life is very simple. It's better not to complicate it. I believe in the basic principles of 4 P's. हमें बचपन में पढ़ाया था. प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइस ठीक हो, सही प्रमोशन करो, और सही प्राइस पे बेचो. मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, सही जगह बेचो. तो ये 4 P's है. इतना सिंपल है, इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करी. तो सेम बता रहा हूँ ना कि हमारा ऐसा नहीं था कि हमारा प्राइस सबसे कम था. सबसे कम प्राइस पे कुछ नहीं बिकता, नैनो भी नहीं बिकी, राइट? तो प्राइस लॉजिकल रखना जरूरी है. एस्पिरेशन इंडिया में बहुत जरूरी है. मतलब मेरे को लगता है कि इंडिया इज द मोस्ट एस्पिरेशनल कंट्री.
इफ यू लुक एट, अगर आप गांव में जाओगे तो गांव वालों को भी बहुत अच्छा लगता है जो सिटीज में खरीद रहे हैं, सिटीज में अच्छा लगता है जो टाउन्स में खरीद रहे हैं, टाउन्स में अच्छा, टाउन्स सॉरी गांव को टाउन, टाउन टू सिटी, और सिटी वालों को अच्छा लगता है कि किम कार्दाशियन क्या पहन रही है. सो आई थिंक इंडिया इज वेरी एस्पिरेशनल एट ऑल लेवल्स. इवन इफ यू सेल anything, you have to sell it with aspiration. So our price was right, and the brand was aspirational, and consumers loved us. And you were profitable from day one. Yeah. So that the profitability is a big challenge for startups, right? Yeah. Everybody talks about valuation. So do you have a word or two for people who are starting out now, how to keep profitability in mind while starting up? मैम मुझे ना समझ ही नहीं आती थी, ये जो पहले कंपनीज होती थी हमारे को ना, हम ना थोड़े जैसे समीर इज अ गुजराती है ना, आई एम अ बनिया, तो हमारे ना थोड़ा एक वे ऑफ लाइफ बहुत अलग होती थी. मेरे को ना एक्चुअली में समझ नहीं आती थी कंपनीज की, और वो लॉसेस कर रही हैं, और स्पेशली इन ब्रांड्स. आई एम नॉट सेइंग इट्स टेक्नोलॉजी कंपनीज को करना हो, ब्रांड्स में लॉसेस कर रही हैं और उनकी वैल्यूएशन लाइक 100x 200x, राइट? सो आई वाज नेवर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम यू नो, एंड इवन मार्केट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इफ यू लुक एट हाउ markets are treating companies with profit, वो जब I think a lot of these startups when they went public is when they realized that boss profit के बिना नहीं हो सकता, right? ये एक वो लाइन नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो पब्लिक ने एक्चुअली सबको सिखा दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम सो हैप्पी नाउ द होल VC वर्ल्ड, द PE वर्ल्ड. आई रिमेंबर आई वेंट टू एन इन्वेस्टर एंड ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर बर्न रेट, राइट? मैं तो, मेरे को समझ ही नहीं आया था कि आई हैव एन अर्न रेट सर, नॉट अ बर्न रेट, राइट? So I'm not saying we will not do losses. हम लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे एक साल लॉस होगा, but I think the DNA of profitability has to be there. There are some companies in our they've just been funded in our industry, और वो आके उन्होंने उसी ग्रुप ने माइक्रोमैक्स में भी इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और अब वो आके पूरा बर्न कर रहे हैं, पैसे मस्त लगा रहे हैं. मेरे को ये पता है मैक्सिमम 1 साल 2 साल में वो कंपनी बंद हो जाएगी, बट वो मार्केट खराब करते हैं. I think as founders now, the market, the industry, I think we've all matured enough to understand that boss, इतने का खरीदो इतने का बेचो, बीच में मुनाफा. That is how the world works, and that is how I think we worked. So yes, it is your motto that earn, don't burn. Yeah. That's what people say about you, and that is perhaps how you have very quickly become market number 1 in India. And number 2 in the world. Yeah. So what about scale? I mean, how did you drive scale so fast? मैम मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि इंडिया में बेच के हम नंबर 2 बन गए वर्ल्ड में, राइट? इट्स we only sell in India and we are number 2 in the world. And which is the number 1 company? Apple, right? So A for apple, B for boat. I always say that.